आपको बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद हैं। उनकी जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करने के लिए एक अपील दायर की गई है और उस अपील पर 3 रुकनी अहम बेंच समाअत कर रहा है। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में ये बेंच समाअत कर रहा है। एक बार फिर से आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पटिशन पर समाअत का आगाज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कमरा नंबर 1 इस वक्त खुल चुका है और तीनों जजेस अपनी कुर्सियों पर मौजूद हैं। बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो गया है। आपको यहां पर बताते चलेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से और उनकी कानूनी टीम की जानिब से ये अपील दायर की गई, पिटीशन दायर की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। 8 फरवरी को इंतखाबात लाजमी कराने हैं और इसी इंतखाबात को करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया क्या था उस फैसले को मुअत्तल करने के लिए ये 3 रुकनी बेंच अहम समाअत कर रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पटिशन पर समाअत का आगाज कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की और उस पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया था और इस वक्त तीनों जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और इस वक्त समाअत का आगाज हो चुका है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस पर समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन की पटिशन पर समाअत का आगाज हो चुका है। यहाँ पर आपको बताते चले 8 फरवरी को इंतखाबात लाजमी होने हैं और जैसे ही यहां पर इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची, जब उनसे सहाफियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस समाअत से पहले हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी तरफ से पटिशन दायर कर रहे हैं और आज ही इस पर समाअत होगी और अब समाअत का आगाज हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव मनासिर हैं जो कि हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कमरा अदालत के ये मनासिर हैं जहां पर तीनों जजेस मौजूद हैं और समाअत का आगाज हो गया है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और BAP इस केस में फरीक बने हैं। उनकी जानिब से यह फैसला किया गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए और इस केस में फरीक बनने को तैयार हैं। और फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से एक अहम मुलाकात भी चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से हुई और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह पटिशन दायर की गई जिस पर समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। ये मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से समाअत से। ये बराह रास्त मनाजिर हैं समाअत के और तीनों जजेस इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अपनी इस पटिशन में 3 रुकनी अहम बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर समाअत का आगाज हो गया है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात ज़िला इंतजामिया अफसरान को GRO और ROs तैनात करने से रोका था और लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने ROs और DROs की मुल्क भर में जो तरबियत दी जा रही थी वो रोक दी थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है। इस अपील में इस्तदा की गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की पटिशन पर समाअत का आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और इस अहम समाअत का आगाज हो चुका है। ये लाइव मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। कमरा अदालत के ये मनाजिर हैं जहां पर तीनों जजेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज हो गया है। आपको बताते चलें कि इस केस में नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, BAP और दीगर जमातों ने फरीक बनने का फैसला किया है और ये पटिशन इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम की जानिब से यहाँ पर जमा कराई गई और अब इस पर समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस अहम केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में
में शामिल हैं और बाकायदा तौर पर समात का आगाज़ हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि PTI के उमैर नियाज़ी ने आरोज़ के फैसले को चैलेंज किया है। ये कहना था वकील इलेक्शन कमीशन का। उमैर नियाज़ी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 को चैलेंज किया है। ये कहना था वकील इलेक्शन कमीशन का। और समात का आगाज़ हो चुका है। वकील की जानिब से दलाइल भी दिए जा रहे हैं। बराह रास्त ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समात इस वक्त जारी है। मनासिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ये अहम समात कर रहा है। एक बार फिर से आपको बताएंगे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल हैं। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क्स दिया गया कि क्या जल्दी थी कि इस वक्त सबको आना पड़ा, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि PTI के उमैर नियाज़ी ने आरोज़ के फैसले को चैलेंज किया है। आपको बताते चलें कि उमैर नियाज़ी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 50 और 51 को चैलेंज किया है। ये कहना था वकील इलेक्शन कमीशन का। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त ये समात के मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। तीनों जजेस इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं। समात का बाकायदा आगाज हो चुका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल हैं। और उन्होंने ये ग्राउंड किया जी कि बिकॉज आर्टिकल 218(3) रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन, this is what our contention is, कि even the impugned order does not mention even a single ground why there should be a suspension of the ARO's or DRO's notification by referring to a single constitutional provision which section 50 and 51 is ultra wise of. Sorry, my lord, we are a bit tired and just take us step by step. First of all, what's wrong with this provision? If it is removed, what do they want? What does this petitioner want? Let me take your lordship through the prayer. What you're saying is, उन्होंने इस सेक्शन को चैलेंज किया है कि 2183 के ग्राउंड पे कि फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और इस प्रोविजन में कौन सी चीज है जो फेयर इलेक्शंस के रास्ते में आती है? They are saying कि the appointment ये जुडिशरी से होना चाहिए. Let me take your lordship to the prayer. प्रेयर पढ़िए ना, उसमें क्लियर हो जाएगा. पढ़ें. तो मुकम्मल कह रहे हैं कि उनको खत्म किया जाए. वो कह रहे हैं कि सेक्शन 50 and 51 is ultra wise. It's at page 25. Please bear with us. Usually we read petitions before we come to court. Ji, my lord. This is a time when we've not read it because I understand. Ji. It's at page 25, my lord. Ji. And the prayer starts at the bottom. Ji. In view of the grounds and facts explicated, it is most respectfully prayed that the instant petition may kindly be allowed and impugned sections 51B and 51(1) of Elections Act 2017 may kindly be declared unconstitutional, void, without lawful authority and of no legal effect. Alternatively, it is prayed that section 51B of the Election Act, to the extent of the expression list of officers provided by the government or a provincial government therein, may kindly be declared unconstitutional, void, without lawful authority and of no legal effect. Further, the Election Commission may kindly be directed to initiate consultation process with the Honorable Chief Justice of the High Courts for the appointment of judicial officers as DROs and returning officers under section 50 and 51 of the Elections Act for the general elections. Moreover, it may kindly be declared that in general elections cannot be conducted in fair, transparent, free and impartial independent manner in presence of DROs and ROs from the executive branch of the state. कभी भी चैलेंज कर सकते थे पहले भी. It has been there for the 6 years. जब ROs अपॉइंट हो गए तो उनको सब याद है. We are at the verge of issuing the. ये एक सेकंड, ये लॉ कब बना है? 2017, my lord. Last 6 years. Last elections कब हुए? 2018. On the basis of this section 50 and 51, they were. Last election में जो DROs थे वो जुडिशियल ऑफिसर्स थे. दिस वाज द फर्स्ट टाइम. नहीं, जुडिशियल ऑफिसर तो नहीं थे. जुडिशियल ऑफिसर्स थे. जो DROs है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स है, वो तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर्स थे. रिटर्निंग ऑफिसर्स भी जुडिशियल उससे लिए थे. AROs जो है, इट वाज अ मिक्स्ड फॉर्म. बट ये आप हम पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं. इसमें लिखा है फ्रॉम द जुडिशरी, subordinate judiciary in consultation with the chief justice of the concerned high court.
So how can somebody impose it? Suppose even you write to the Chief Justice, then it's his discretion whether he wants to spare a judicial officer or officers or not. Yes, in fact, what we did was, we did write to all the 5 honorable Chief Justices of When the did you High write? Courts, When? Different letters. Are they on record? जी, they are on the record. दिखाएं? कब लिखा आपने बताइए? The first one is the Lahore High Court. It's at page 208. Letter was dated 1st of February 2023, in February, my lord. And there was a clear regret. Where is it? Where is the regret? It's at page 208. There are 2 letters of Lahore High Court. The reply is at page 210 of the paper. You wrote as far back as 1st of February. Yes, my lord, because the Provincial Assembly ठीक है, of the Punjab हाँ, नहीं, was. फिर बताएं फिर कब है? फिर my lord, उनका जवाब regret कहाँ 210 पे, 210 पे, page 210 पे letter of regret है. जरा पढ़ दें. जी my lord. मैं take your lordships to regret. 211 पे. नहीं, regret में जो reasons दिए हैं, as we speak. जी, there was a shortage of judicial staff and all that. पढ़ लेना. It's para 2. Para 1. जी, Para 2-1. Para 2-1. As we speak, a huge number of cases totaling 13,12,480 are pending adjudication in the courts of district and session judge, additional district and sessions judges, senior civil judges, and civil judges throughout Punjab. And if services of majority of these officers are given as district returning officers and returning officers at the disposal of Election Commission of Pakistan, this pendency will mount to by manifold. And the ultimate sufferers will be the poor litigants, resultantly hampering the entire scheme and system of dispensation of justice at the grassroots level, and this cannot be afforded compromise at the cost of delay in justice and aggravating nuisance of the human right. But if this letter is already in the field, then the petitioner does not want elections. मैं उस पे अर्ज कर देता हूं. If the Chief Justice, the Lahore High Court, the others have also declined or not? Out of 5, the Islamabad High Court did not respond. जी. We wrote in September and October to all the others. The Peshawar High Court said कि go to that's the judicial policy. आप वहाँ से जाके clarification लें. They did not agree to accede to our request. Balochistan High Court initially agreed, but later on the learned registrar said कि no, we cannot provide. This was as near as the 2 weeks back. And Sindh High Court, just like Lahore High Court का एक और superseding letter है वो मैं अभी पढ़ता हूँ. They said कि नहीं, जब आप election program issue करेंगे फिर हमें request भेजिएगा. तो election program तो बिल्कुल at the words आता है. हमने AROs और DROs की training तो पहले करनी है. वो तो पहले होते हैं. अच्छा, नहीं तो फिर इसका मतलब है कि your first choice was Our first choice was judicial officer. but the High Courts did not agree. Did not agree. And for valid reasons, because you hold election and the litigant then suffers. And That judges, 1.5 months. there is also another aspect, because I remember the elections when we did give judicial officers, and this was, I think, when I was Chief Justice of Balochistan, then the allegations invariably, and we also do judicial work, then the same matter may come before us in a judicial forum, because election tribunals are also judicial officers. So it could be argued that, this is a job, if we have a clearly separation of powers of the executive, the judiciary, the legislature, we forget one important pillar, which is the election commission. But it's not a part of the executive, it's not a part of the judiciary, it's on its own. We are a federal institution, but our constitutional body on its own, not under any. Yes, so your choice was not, the first choice was not, you didn't appoint yourself. No, my lord. You asked the judiciary. We were constrained, and the actually. judiciary, basically this, in Punjab, there is a clear-cut no. Clear-cut no. उसके बाद in October, Then there was another letter. Then I'm just thinking, how can the learned judge suspend an order? He will issue a writ against the High Court. That's one of our grounds. No, then the learned single judge has passed an order. The single And judge. he will direct the Chief Justice to provide officers. When can a writ be issued against the High Court? So what sort of relief do they want, or they don't want elections?
Where is this, prima Mr. facie- No, where is this, Mr. Niazi? I mean, if one person is going to hold Pakistan to ransom, I mean, he's just one individual, and he says, "I'm so and so." No other political party has come forward to challenge this. Political appointment. parties, There are the political more parties than- in a business of elections. So why would they? They challenge want it? an election. And this one political party says, "I don't want elections," but it was the very same political party whose petition I decided. Yes, we have attached that 3rd of November's order along with this petition. But usme to the election, why didn't they say those things then? It was represented before us, if I remember correctly, by Ali Zafar. yes, Mr. Ali Zafar was representing And Pakistan. there was no such demand or suggestion, and we kind of got the order. This appears to be, I don't know if it's bona fide petition or not. My lord, in fact, with due respect to the learned single judge, there's not even a single ground No, which let's says read- it's let- ultra vires. Really, let the read Which order. provision is ultra vires of? Ye kidhar hai? Where is the My lord, the order starts at page 10. Let's read the operative part. G, because- page 12, my lord. Page 12. At page 12, para 4. नहीं ये तो legally under challenge है. But what have they? What have These they- are the No, no. discussions. Can you read paragraph 7? My lord, then we go to the speaking part, which is para 7 and 8. नहीं 7 पढ़ें. G, 7. Keeping in view the importance of the legal interpretation of the constitutional provision having legal effect deeply connected to the Sorry, raised sorry. national issue. Where is the constitution provisions? There's no constitution. There is no. The whole Chale, order आगे- is silent as to which. नहीं, I don't know. Let's read it further. Having legal effect deeply connected to the raised national issue, office is directed to place this file before the Honorable Chief Justice for constitution of a larger bench. Page. But para he is eight. not passed in an order. My lord, these are the reasons. Yeah, Para आगे क्या- 5, 6, and 8 फिर क्या कहते 8 is the suspension order. Notice. Meanwhile, the notification dated सारे के सारे 11 December 2023 issued by the Election Commission of Pakistan appointing the DROs, ROs, assistant returning officers from executive shall remain suspended. Shall remain suspended. So there is a complete. One second, I fail to understand. If a judge is passing an order for constitution of a larger bench, then judicial propriety demands that he stays his hand. Yes. How can then he pass an order? Either he passes an order and doesn't say the matter be placed before the Chief Justice. Then the Chief Justice has been given a fait accompli. You do what I ask you to do. In fact, Either you request the Chief Justice of Constitutional Larger Bench, or you don't make this request and you just proceed with the matter. Yes, my lord. So, has the larger bench been constituted? It has been constituted for Monday. Who is heading the larger bench? The very honorable judge. The same judge. The same judge. 2 other judges. Five member bench. This is very strange. What is the purpose of this petition? In fact, what has No, let's look at logically. my lord? Now, who have you appointed? Have you appointed people of some political party as ROs or DROs? No, my lord. Who have you appointed? These are there's a mix. नहीं एक पे चलते हैं ना. My lord. There are 4 notifications. जी. Let's take the first one. Notifications are at No, in the page order it is. 27. Yeah, no, हाँ, one at a time करें. My lord. It starts at page 27, my lord. The notification. This is for DROs. These are DROs. अच्छा, 11th of So December. notifications all across the country have been It's suspended? all across the In country. Sindh and Balochistan also? My lord, this notification is across the country. This How many notification- DROs in the country? कितने DROs appoint हुए? Per district, every district कितने हैं? has. Total कितने हैं सारे? 85. This is अच्छा ये पहला वाला देखिए. अच्छा I'm told it's 144. it gives the total number, my lord. ये इन्होंने शायद हिसाब लगा लिया. ये जरा कैलकुलेट कर लें कि 30. DROs और AROs टोटल कितने हैं ऑल पाकिस्तान? Total is 148 DROs. नहीं टोटल AROs All over the DROs ऑल ओवर पाकिस्तान कितना है टोटल फिगर? EROs is 148 148 और ROs कितने? AROs हैं AROs हैं चलिए आप इनको हिसाब लगा के देखें, ऐसे बातें ना करें, कागज के टोटल टुकड़े फिगर कर दे रहे हैं देना ना. हमें टोटल फिगर गिन के बताइए. 859 ROs. अच्छा नहीं, हम जरा इनके नाम देखना चाहते हैं किसको आपने अपॉइंट किया है. My lord. ये रिटर्निंग ऑफिसर पेज 27 पे कौन है ये लोग? नहीं, पेज
पेज 27 पे आपने पहला बताया ना ये this is the reserved seat वाला notification. पढ़ तो देना कौन है डीआरओ किसके ये रिश्तेदार These are from our own offices. पढ़ देना डेजिग्नेशंस पढ़ दे नाम ना पढ़े Mohammed Fareed Afridi, Additional Director General Elections 1, Election Commission of Pakistan. तो ये तो चैलेंज भी नहीं हुआ और सस्पेंड हो गया। ये तो सारे आपके अपने ये लोग तो हैं। हमारे अपने हैं। तो ये हमने तो चैलेंज ही नहीं किया पिटिशनर। नहीं किया उसने तो खाली कहा था कि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव there was a CM file, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये वाला भी इंक्लूड करें। इवन दो द वायरीज इज ओनली तो फिर चैलेंज। आप भी इलेक्शन ना कराएं, एग्जीक्यूटिव भी ना इलेक्शन कराएं, कौन जुडिशियल कराए? ऑफिसर भी ना इलेक्शन कराएं, तो will the एक्चुअली election take? ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू होल्ड इलेक्शंस देन। That is prima facie the Mr. intent. Swati, the varies of section 51B has been challenged. My lord. This is under A. यस ये तो चैलेंज ही नहीं हुआ ना। और these all have been suspended. ये तो आपके अपने दफ्तर के मतलब अपने इलेक्शन कमीशन के लोग हैं। जी, this notification जो कि रिजर्व सीट फॉर वुमेन के लिए है वो हमारे ऑफिस। अगला वाला पढ़ें। नेक्स्ट इज पेज 29 पे। अब ये कौन है डीआरओस? ये डीआरओ है जी, मोहम्मद इरफानुद्दीन, नाम नहीं बताएं, डेजिग्नेशन बताएं। डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल। तो ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं। जी, सारे डिप्टी कमिश्नर। तो ये इसमें तो आपने हम देखना चाह रहे हैं कि आपने कोई पिक एंड चूज की है। No. ये तो आपने We in fact एक सेकंड, ये सारे इस पेज पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, दूसरे, तीसरे, उसमें भी चौथे, डिप्टी कमिश्नर। पांचवे, छठे, ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स all are deputy commissioners. तो DROs are deputy commissioners. They are the तो deputy. इसमें आपने कोई मतलब ये नहीं There कि is no कोई picking. एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक को लगा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट से दूसरे को लगा दिया। No. DROs are all deputy commissioners of the relevant districts. माशाल्लाह। तो फिर अब तीसरा नोटिफिकेशन कहाँ है? तीसरा नोटिफिकेशन है जी पेज 39 पे जी। 39 39 पे my lord. It's 11th December. Additional Deputy Commissioner General. ये भी सारे आपके एडिशनल कमिश्नर Additional Deputy Commissioner. Without any discrimination. बल्कि when the नहीं, तो आपने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। No. They were posted as They were posted, already posted. In fact, जब हम the caretaker government came, we issued a directive के shuffle और the appointees जो कि पिछली वाली governments के थे या वो सारे, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was actually shuffled. So these are actually when was working. that? When was the shuffling? ये different times पे होती है, ये फरवरी से शुरू हुई है शफलिंग करवाने, क्योंकि प्रोविंस ऑफ पंजाब the election had to take place at that time. Who is the gentleman barrister Umair Khan Niazi? My lord, he says he is the general secretary. Has he attached any authority from the party itself? No, there is none. So इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, he's just one individual. One individual person has come and challenged the notifications of all Pakistan DROs. Sabotage the whole Is he process. related to, because the word is Niazi, is he related? I have no idea. I don't know. That's no concern, but And who have been प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, इनको भी पार्टी बनाया हुआ है। जी, उनको भी पार्टी बनाया। उनका क्या काम है इससे? President, because the president had announced the date. तो फिर बेसिकली दे डोंट वांट इलेक्शंस टू टेक प्लेस। Want elections to take place. The president and the election commission together, if I remember, वो हमारा ऑर्डर किधर है जो हमने पास किया That था? is at page 3rd of January 224, my lord. हाँ? 2 to 4. Page 2 to 4 Two. of the petition, my lord. And the speaking. इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ is one of the petitioner. इसमें तो हमने वाजे तौर पे लिखा हुआ है पेज पैराग्राफ 230 पे पैराग्राफ 18 में पढ़िए। जी मालूम पैरा 17 your lordship. पैराग्राफ 17 या 18? पैरा 17 it starts at पैरा 17 and 18 पढ़िए, वो तो जरा पूरी हिस्ट्री दे रहे। 18 is the President of Pakistan and the Election Commission have announced the date for holding of general elections to the National Assembly and the provincial assemblies. The federal government, the provincial governments and the Islamabad Capital Territory have concurred. The matter of holding the general election on 8th February stands resolved. No one should now put forward any pretext to derail democracy. No, but shall we issue a contempt notice? Exactly. No, isn't this word clear? No one should now put forward any pretext to derail democracy. Democracy. The timing is very Nee, important. sorry, Madam. this is Barrister Umar Khan Niazi, then this is a violation of the Supreme Court order. It's a violation of my clear And this patent petition is entertained and interim order passed, and then larger bench is constituted, which is again headed by the same judge.
Your Lordship. And so much so, there is a clear verdict, 12-member bench, कि provision of the law till it is actually declared. एजाज हसीस case कि आप उसको ऑपरेशन नहीं सस्पेंड लॉ कर को सकते. छोड़ दीजिए, हम आइन पे चलते हैं ना. Your Lordship. आइन में आप ये किसका काम इलेक्शन करवाना? Election Commission. कौन सा प्रोविजन है? 218 and 19, my lord. 218 and 19. And 19, my lord. मिस्टर स्वाति, while we read this, ये जरा बताएं कि पिटिशनर ने क्या कहा कि ये तकरीबन 1000 आदमी बन रहा है ना जी. समथिंग लाइक दिस. जी. 1014 बंदे 1014 बंदे जो हैं, इसमें से क्या इनके बारे में क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं जी कि एमपीओस के ऑर्डर भी यही डीसी पास कर रहे हैं, वो तो अंडर द लॉ उन्होंने ही पास करने. ये सारे की सारी मतलब सारे के सारे हटा दें और जुडिशियल आपको हो सकता है ना कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने खास बंदा लगा दिया है. वन ऑफ होता तो शायद वी कुड हैव एंटरटेन्ड दैट कि जी एक बंदा बाइस्ड है. यही मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ. इस पिटीशन से फाइल करने से पहले उन्होंने आपको कोई दरखास्त दी बराए करम ये कर दीजिए? नो माय लॉर्ड. स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट. स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट. और अभी 5 दिन पहले 1014 जो भी लोग हैं, ये सारे वो क्या कहते हैं पिटीशन में? दे आर बायस्ड. they say कि they belong to the machinery of executive और executive के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है. ये तो इसलिए जुडिशियल साइड से होने चाहिए. तो फिर वो ये भी कह सकते हैं हमें जुडिशरी पे ट्रस्ट नहीं है. उनके कहने से क्या होगा? In any case, this is part of the law, which somebody could have challenged, and as pointed out earlier elections have taken place. Yes. तो इस तरह और कब शुरू हुआ है ये, कब अपॉइंट हुआ और कितनी ट्रेनिंग हो गई अभी तक? What has happened? Lord, 11th of December को ये पॉइंट हुआ है और अभी तक और 3 दिन हमने ट्रेनिंग. There were 7 days training, 3 days training took place. Then we had to halt the training in compliance with the interim तो ये order. बताएं कि why you hold it? Because the notification was suspended. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, ट्रेनिंग तो सस्पेंड नहीं हुई थी. अगर उनकी ट्रेनिंग हो जाती तो क्या फर्क पड़ना था? ये ऑर्डर कब पास किया इन्होंने? ये कल पास किया 13th को, परसों. And when was the election program due? आज 15th को. ट्रेनिंग एक दिन हुई है सर. है जी? ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन हुई और 7 दिन की ट्रेनिंग थी. इधर कोई पीटीआई का कोई है? नहीं, हम मुझसे समझना चाहते हैं ना भाई वजह क्या थी ये करने की. नहीं देखें, आप ये भी तो देखें वो बंदा इंडिविजुअली कर रहा है, नाम वो यूज हो सकता नाम है, use करे. तहरीक इंसाफ का नाम यूज करता doesn't have any authority of हो. any कौन party. लोग हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? यस. ये बताइए इसके बारे में.